Hello, class. Last session, we have completed our lecture with this particular table. So, once again, I welcome you all. As discussed in my last lecture, today we are going to discuss in detail about two of the types of plans. One is objectives, and the other one is strategies. Let's have a look. So, how we are going to discuss about objectives and strategies? We will start with the introduction. We will see why objectives are important and what are the essentials of a valid objective. So these are the three things we are going to discuss in today's session. Now, how objectives and strategies are connected to each other? A simple line explains it all. So here it is. Objectives is defining where we are going. Means objectives tell us what are our targets, what are our goals, where we want to reach, what is the aim that we want to achieve in our business, and strategies is that type of a plan which help us to know how we will reach to that target. सिंपल शब्दों में ऑब्जेक्टिव्स हमें ये बताता है कि हमें कहाँ जाना है, हमारा टारगेट क्या होगा, एंड स्ट्रैटेजीज हमें बताएगा कि हम उस टारगेट तक कैसे पहुंचेंगे. So objectives in one word are the goals, and strategies is that plan which help us to achieve our goal. Now let's look in a little more detail what are objectives. So to define objectives, objectives are the end points towards which organizational activities are directed. So it is the final goal basically. कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, आप या मैं, हमारे लाइफ में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव. अब ऑब्जेक्टिव को अलग अलग वर्ड्स भी हम बोल सकते हैं. हम उसे बोल सकते हैं गोल्स, एम्स, पर्पस, मिशन, टारगेट्स. दे ऑल आर एक्चुअली सेम. ऑब्जेक्टिव ये सबसे बेसिक प्लान होता है किसी भी बिजनेस का. विदाउट ऑब्जेक्टिव यू जस्ट कैनॉट गो अहेड. विदाउट नोइंग कि डेस्टिनेशन क्या है, आप कभी भी कोई भी ट्रेन को बोर्ड नहीं करते हो. आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है और वही ट्रेन का टिकट आप खरीदोगे. सिमिलरली ऑब्जेक्टिव इज दैट टाइप ऑफ अ प्लान जो सबसे बेसिक है, जिसको लिखे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो. सो दैट इज वाई वी से इट इज अ बेसिक प्लान. इट हैज अ वेरिएबल स्कोप. वेरिएबल स्कोप मतलब प्लान, ये जो ऑब्जेक्टिव प्लान है आपका, इट कुड बी शॉर्ट टर्म, इट कुड बी मीडियम टर्म, इट कुड बी लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म मतलब ऐसा कोई भी गोल बिजनेस का जो आपको एक महीने में या अगले 2 महीने में आपको अचीव करना है. मीडियम टर्म कुड बी अ गोल दैट यू वांटेड टू अचीव फ्रॉम 6 months to 1 year of टाइम रेंज. एंड लॉन्ग टर्म गोल या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वो है जो आने वाले 5 से 10 सालों में आपको अचीव करना है. तो ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकता है. डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अलग होगा, एम्प्लॉय का इंडिविजुअल लेवल ऑब्जेक्टिव अलग होगा, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अलग होगा, और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स शुड बी इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर. तो ऑब्जेक्टिव्स का स्कोप अलग अलग हो सकता है. दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इट एज अ वेरिएबल स्कोप. मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, दिस इज व्हाट वी जस्ट नाउ सेड. मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होंगे. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होगा, सेल्स का अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव अलग होगा, मैनेजरियल लेवल के ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, इंडिविजुअल एम्प्लॉय लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे. तो ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल हो सकते हैं. नाउ द पॉइंट कम्स वेयर वी एक्चुअली हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स को लिखना, समझना या ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना. व्हाई एक्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट, लेट्स हैव अ लुक. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव एक मिशन
वाला फीलिंग देता है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ मिशन. सो वेन एवर यू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आपने डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स लिखा, आपके पर्सनल एकेडमिक लाइफ के लिए अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिखा है, तो वो एक मिशन की तरह काम करता है, आपके एफर्ट्स को सही ट्रैक पे रखने के लिए हेल्प करेगा. तो ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन, इट सर्व्स एज अ गाइडलाइंस एंड क्रिएट अ कमिटमेंट. तो एक गाइडलाइन की तरह काम करेगा, आपको कमिटेड रहने के लिए, उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए, उस पे उसका ध्यान रखेगा, और आपके एफर्ट्स को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट, let's see why objectives are important. Because it is a integrated planning. मतलब क्या, ऑब्जेक्टिव ऐसे स्टैंड अलोन प्लान नहीं है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर अलग अलग बाकी के प्लान्स डिपेंडेंट है. मींस एक बार आपने ऑब्जेक्टिव लिख लिया, जैसे आपको सेल्स को इंक्रीज करना है 15% से, आपने ये ऑब्जेक्टिव लिखा, ओके. उसके आगे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप पॉलिसीज बनाओगे, आप प्रोसीजर्स लिखोगे, आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिजाइन करोगे, आप एक बजट लिखोगे. तो यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्टिव लिखते हो और उससे जुड़े हुए सारे बाकी के प्लान्स, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड द वर्ड इंटीग्रेटेड प्लानिंग. So it is that type of a plan which is connected to the remaining plans in your business. Next, ऑब्जेक्टिव अगर आप लिखते हो तो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, डेफिनेटली. So whenever you write any objective, whenever you read that objective on a everyday basis, आप जब भी वो उस टारगेट को देखते हो, हर बार जब भी आप काम शुरू करते हो, तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ मोटिवेशन एंड इट मेक्स योर जॉब मीनिंगफुल. तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ तक पहुंचना है, आपको एग्जैक्टली exactly क्या अचीव करना है. तो आप क्लूलेस नहीं रहोगे, आपको सोचना नहीं होगा कि आपको करना क्या है, क्यों करना है. सो ऑल दीज आंसर्स आर देयर whenever you write down your objectives in a clear and specific manner. तो ऑब्जेक्टिव एक मोटिवेशन की तरह एक्ट करेगा, काम करेगा. अगर आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स है, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? जहां पे एक टॉप लेवल मैनेजर उसके मिडिल लेवल मैनेजर एंड लोअर लेवल मैनेजर को अथॉरिटी डेलीगेट करता है. सो एवरी टाइम वो जो टॉप लेवल मैनेजर है, उसे हर एक काम में ध्यान नहीं देना पड़ेगा. जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली बता देते हो, वंस यू स्पेसिफाई कि दैट दिस इज द टारगेट, दिस इज द टाइमलाइन, और ये रिसोर्सेस है आपके पास आपके टारगेट को पूरा करने के लिए, तो वैसे ही आप वो जो अथॉरिटी है, वो सामने वाले जो आपका अदर नेक्स्ट लेवल मैनेजर है, आप उसको हैंड ओवर कर सकते हो, दैट इज डेलीगेट कर सकते हो. इससे होगा क्या ना, एक जो टॉप लेवल मैनेजर है उसका भी अपना एक प्रेशर कम हो जाएगा, एंड जो उसके नेक्स्ट लेवल का मैनेजर है, मिडिल लेवल मैनेजर, वो भी अपना काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कंप्लीट करेगा. सो वेन एवर यू स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर, तो आपको डिसेंट्रलाइजेशन में भी हेल्प हो जाता है. तो आप अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग लोगों को काम दे सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव्स का एक और इम्पोर्टेंस है, इट क्रिएट्स सम स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल. सो जैसे ही आपने आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को टारगेट दिया या ऑब्जेक्टिव दिया कि इस महीने तुम्हें 10 पॉलिसीज को बेचना ही है, तो एज सुन एज यू गिव द टारगेट ऑफ सेलिंग 10 पॉलिसीज, just understand what actually you're going to do. You're going to control the behavior of that particular sales executive. आप उसके सारे डिसीजंस के ऊपर आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, उसने कितने सेल किए हैं पॉलिसीज, उस पे ध्यान दे सकते हो, आप उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हो. सो इट इज एक्टिंग एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल. तो किसी के भी परफॉर्मेंस को आपको मेजर करना है कि बेस्ट परफॉर्मर कौन है, कौन से एम्प्लॉय ने टारगेट्स को अचीव किया है, कौन से एम्प्लॉय अभी वीक है जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है. तो वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक सच डिसीजंस, यू नीड टू हैव अ क्लियर कट ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज voluntary coordination. See, it is obvious that whenever you write down the objectives along with your team members, ठीक है, मतलब आप एक टीम लीडर हो,
आपने आपकी टीम को बुलाया और आपने मिलके टारगेट डिसाइड किया। उन आपके टीम मेंबर्स से डिस्कस करके अगर आप टारगेट डिसाइड करते हो, ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, देन यू आर गोइंग टू गेट देयर कंप्लीट सपोर्ट। सो इट इज मेंशन्ड हियर दैट वॉलेंटरी कोऑर्डिनेशन अगर है, म्यूचुअली एग्रीड ऑब्जेक्टिव्स अगर है, देन योर एंटायर टीम इज गोइंग टू वर्क together and you are going to get complete support of your team members. So whenever you as a team leader, whenever you are setting the target, आपको ensure करना है कि आपके टीम को आप साथ लेके हो और उन and then you consult your team members and then you frame your objective. So these are the importance of objectives. Coming to the next topic, कि whenever you are writing the objectives, आपके objectives में क्या वो बातें होनी चाहिए जिससे आपका ऑब्जेक्टिव मीनिंगफुल भी लगे और जिससे आपका टारगेट फाइनली आप अचीव करो। तो आप जब ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, इट हैज टू बी रिटन इन अ वेरी 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 स्पेसिफिक एंड क्लियर मैनर। लेट्स हैव अ लुक। सो हियर आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर ये चीजें नहीं है तो आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट जो आपने लिखा है वो इनवैलिड है, वो इनकम्प्लीट है, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। Starting with the first one, clear and specific. Whenever you're writing the objectives for your department, ensure that you write it clearly and you specify. आपको क्या अचीव करना है, आपको क्लियरली स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि कस्टमर कंप्लेंट्स को रिड्यूस करना है, ये अगर मैंने ऑब्जेक्टिव लिखा, सो आई एम नॉट क्लियरली सेइंग कि कौन से कस्टमर्स का, कौन से एरिया के कस्टमर, नवी मुंबई के कस्टमर्स है, थाने के कस्टमर्स है, मुंबई के कस्टमर्स है, मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। इफ आई जस्ट से दैट रिड्यूसिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, आई डोंट नो हाउ मच आई हैव टू रिड्यूस। मुझे 2% से कंप्लेंट्स रिड्यूस करना है, 10% से करना है, 15% से करना है। मीन्स वॉट? वेन एवर यू आर राइटिंग द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इट हैज टू बी वेरी क्लियर और स्पेसिफिकली उसमें आपको मेंशन करना है कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है। सेकेंड वन इज इट शुड बी मेजरेबल। We have done this last year also, if you remember. We have learned one of the acronyms, that is SMART. So S is specific, M is measurable, A is achievable, R is realistic, and T is time bound. So here comes our second essential of a valid objective, which is measurable. तो आप जैसे 1 महीने का टारगेट लिखा आपने, 1 महीना पूरा होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि आपने आपका ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट अचीव किया है या नहीं? तो आपने जब लिखा उसे, यू हैव टू राइट इन सच अ वे दैट एट द एंड ऑफ 1 मंथ you should be able to measure the performance. For example, suppose आपने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एक लिखा है ऑब्जेक्टिव that you want to increase the sales, full stop. So here you are not mentioning how much percentage. तो measurable कब होगा? जब आप उसमें परसेंटेज ऐड करो। So when you say that you would like to increase the sale of a particular product by 7%, तो जैसे आपने 7% डाला, आपका ऑब्जेक्टिव बन गया measurable. Next is it should be result oriented. I mean, this is so obvious. Whenever you are writing any objective, whenever you are writing any aim, goal, it has to take you to some result. So अगर आप 1 मंथ के लिए ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर रहे हो या 5 years के लिए ऑब्जेक्टिव फ्रेम करते हो, तो एट द एंड ऑफ दैट टाइम ड्यूरेशन यू शुड बी हैविंग सम measurable result in front of you. तो every time you write down the objective, you have to mention कि इसका फाइनल नतीजा आपको क्या देखना है, इससे होगा क्या, what should be the final result that you want to achieve as a manager. That should be mentioned. Next is coming to the fourth point, which is laid in key business areas. So key business areas means आपके जो भी business के functions है, planning,
जैसे प्रोडक्शन है, एचआर है, मार्केटिंग, सेल्स, इन्वेंटरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप जब भी ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो, आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये सारे की बिजनेस एरियाज जो भी आपके हैं, जैसे अगर आप प्रोडक्शन में डील कर रहे हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के भी आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। अगर आप सेल्स करते हो तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग के भी ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करना है। सो वेन एवर यू आर राइटिंग डाउन द ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, ensure that you just don't write general objectives, but you also write down the objectives in the key business areas. Coming next is mutually supportive and interconnected. So आप जितने भी ऑब्जेक्टिव्स लिखते हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग सेक्शंस के, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फाइनली आपको एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाता है। And how, when is it this possible? Only when all your objectives are interconnected to each other. ऐसा नहीं हो कि सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम सेल्स बढ़ाएंगे 50% से, ओके 50% उन्होंने टारगेट रखा है, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास तो उतनी मशीनरी भी नहीं है, इन्वेंटरी डिपार्टमेंट के पास उतना रॉ मटेरियल नहीं है। सो वेन एवर सेल्स डिपार्टमेंट इज डिजाइनिंग देयर ऑब्जेक्टिव, दे हैव टू एंश्योर दैट उनके पास उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उनके पास उतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है, मैन पावर अवेलेबल है। एंड दिस टेल्स अस दैट whenever you write objectives it has to be interconnected. आप इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का या इंडिविजुअल सेक्शन का स्टैंड अलोन ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज objectives should be realistic. Means what? Whatever you're writing down as the target, it should be achievable in your real lifetime. It should be achievable in reality. Okay. So if I say that I want to sell a product, 1,000 units of a certain product in the next week, now I have decided this goal for my department. But in the reality, I don't have sufficient machinery, I don't have raw material, I do not have the manpower who will manufacture the given number of units of product. How am I going to achieve it? Therefore, whenever you write down the objectives, ensure that you have sufficient resources with you and it is possible for you to achieve that objective in reality. Therefore, the objective should be realistic. Coming next is valid and flexible. So whenever you are writing down the objectives, it should be valid. You cannot write something which is not permitted by your organization. You cannot write an objectives which is illegal. You cannot write an objectives which is not permissible by your management. So it has to be valid. It has to be approved by your higher management. And it should also be flexible. अब फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? अगर कोई भी लास्ट मिनट चेंजेस हुए, सपोज आपके फैक्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया कुछ इंटरनल इश्यूज के कारण, तो आप इस स्ट्राइक को और आपके दिए गए अगले महीने के टारगेट को कैसे सॉल्व करोगे? सो वेन एवर यू राइट डाउन योर ऑब्जेक्टिव्स, एंश्योर दैट वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो अकॉर्डिंग टू द टाइम या अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो भी चेंजेस करना अगर पड़े तो इट यू शुड बी एबल टू मेक द चेंजेस। देयरफॉर the objectives that you write should be valid and flexible. Last but not the least, objectives should be acceptable. Now this is very important. You as a manager, whenever you write certain targets, you may be having, you may be highly ambitious, you wanted to achieve higher goals, you wanted to prove yourself that you are the best manager for the company. But while you're doing this, whenever you write down the objectives or whenever you set the targets, ensure that it is also acceptable by your team members. It is acceptable by your organization. Therefore, you cannot plan, you cannot set the objectives without
taking the consent of your remaining team members, or you cannot frame the objective without taking the consent of your higher authorities. Therefore, the objective should be acceptable. So here we complete with our topic for today. Let us quickly revise it. We started with understanding what are objectives. So objectives can be defined as the end point towards which organizational activities are directed. Now, objectives are the basic plans. So any activity starts with objectives. It is variable, it has a variable scope. It could be long term, medium term, short term. There could be multiple objectives at a same given point of time. Now, why objectives are important? It gives a sense of mission. It helps in integrated planning. So all the plans are interconnected to objectives. It provides motivation. So whenever you look at your goals, whenever you look at your target, you feel motivated. It is also helping in decentralization. So clearly mentioned objectives helps in decentralization. It also gives us standards for control. So whenever you want to measure the performance, identify the best performer, or whenever you want to identify who needs extra training, then objectives are going to help. Last but not the least is voluntary coordination. So your objectives, if they're framed voluntarily, then as a manager, you will get complete support from your team members. Moving to the last topic for the day, essentials of valid objectives. So let's quickly revise. Objectives should be clear and specific. It should be measurable. Objectives should be result oriented. Objectives should be written down in the key business areas. It should be mutually supportive and interconnected. Objectives should be realistic. Objectives should be valid and flexible. Last but not the least, objectives should be acceptable. So here we finish with our first type of plan, which is objectives. So until the next time we meet, wishing you a happy learning. And in the next class, we are going to deal with our second type of plan, which is strategy. Thank you, everyone.